अस्सलामु अलैकुम। रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। Dear students, I am Dr. Muhammad Iqbal, your course instructor, Education Planning and Policy, Semester 2, MA Education Leadership and Management. Dear students, this is my 14th lecture, and the topic of this lecture is education sector reforms. Dear students, education sector reforms a very important and significant project and plan of in the history of education of Pakistan, and also it is implemented after the National Education Policy 1998. So now I will discuss in detail the salient features or thresh areas of target areas of education sector reforms. Introduction. Education Sector Reforms 2003 ESR 2003 program is built upon the long-term vision of the National Education Policy 1998-2010 and 10 years Perspective Development Plan 2001 to 11. Government of Pakistan has also formulated its policy for promoting economic growth, education for all, EFA, Millennium Development Goals, MDGs, including poverty reduction in interim poverty reduction strategy, IPRS. Dear students, education sector reforms brought many changes and reforms in education system of Pakistan, and it was initiated in 2001 with systematic intention on major areas of education which were deficient and need improvement. These areas were following. Number 1, Universal Primary Education, UPE. Dear students, in each policy the universal primary education was remaining deficient. So in this project or plan, the education policy, universal primary education was focused with zeal and zest. Number 2, quality assurance. Quality assurance regarding the teaching learning process at primary secondary level and training of teachers and manpower was focused to enhance the quality of the education system in Pakistan. Number 3, revamping of science education. The third major area of education sector reform was revamping or development or improvement of science education, which was still lacking in Pakistan. Number 4, higher education. Higher education was also lacking behind, and the targets of higher education were not improving. At the time of implementation of first education policy 1998, the higher education participation rate of in higher education was only 3%. The education policy 1998 fixed the target of 10% up to 2010. So this
target or this higher education was included in this plan to improve its facilities, to improve its system, to shift from teacher centered to student centered, and shift in the curriculum and teaching methods and research, and so many initiatives have been taken in higher education in this project. So higher education was focused. Number 5, vocationalization of general science secondary education. Vocationalization of general secondary education was also a major area of focus in this sector reform. Number 6, promotion of technical education. In the vocational education and promotion of technical education was fixed or focused in this plan of education sector reform. Number 7, mainstreaming of madrasa. So mainstreaming of madrasa education to the formal education system. This was also a main target of major area of education sector reform. Number 8, public-private partnership. Public-private partnership was implemented through this project because it was an important target and goal of education policy 1998. And number 9, the adult literacy. Adult literacy is remained focus area in every government and in every policy from the previous history of education in Pakistan. Each government has given its intention or its interest to improve the adult literacy. So this was included in the education sector reform. For universal primary education, now I will discuss these targets in details. So number 1, target reforms. I will discuss that each target and action plan for that target one by one. So target reforms, that deduct education for all, emphasis quality universal education, ensuring access and interesting and increasing participation rate up to 100%, reducing gender disparity. अजीज़ तलबा, एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म में ये एक अहम टारगेट था और रिफॉर्म थी कि क्वालिटी यूनिवर्सल एजुकेशन को में 100% प्राइमरी एजुकेशन लेवल पर रेट बढ़ाया जाए और जेंडर डिस्पैरिटी यानी मेल फीमेल में, गर्ल्स और बॉयज़ में सहूलतों के लिहाज के साथ फ़र्क को ख़त्म करते हुए, और इसके लिए एक्शन प्लान जो था वो इसमें सेक्टर एजुकेशन रिफॉर्म में जो तजवीज़ किया गया था वो ये था प्रोमलगेशन ऑफ कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन ऑर्डिनेंस. सो कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट या ऑर्डिनेंस नाफिज किया गया. इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्जिस्टिंग प्राइमरी स्कूल्स, मौजूदा प्राइमरी स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की शुरू की. फ़र्ज़ करें उनकी बिल्डिंग्स में और उनके फैसिलिटीज़ में इसमें इन्हांस किया गया, इजाफा किया गया और उन मिसिंग फैसिलिटीज़ को पूरा करने की तरफ तवज्जो दी गई. इनिशिएशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन स्टेज इन स्कूल्स. सो एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म का नहायत अहम स्टेप ये था कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पाकिस्तान में एक स्टेप के तौर पर इसका आगाज़ किया गया और उसको एक्सेप्ट किया गया. कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू स्कूल्स, इस प्रोजेक्ट के तहत नए स्कूल्स जिन एरिया में मिसिंग फैसिलिटीज़ थी वहाँ ये नए स्कूल्स भी कंस्ट्रक्ट किए गए. Community basic education school and free textbooks for children and free braille books to the usually handicapped
people. तो इसमें ये कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन स्कूल्स और बच्चों के लिए फ्री टेक्स्ट बुक्स और ब्रेल बुक्स जो है, जो विजुअली हैंडीकेप्ड बच्चों के लिए शुरू की फ्राहम करने का इसमें एक्शन प्लान बनाया गया. क्वालिटी इंश्योरेंस के हवाले से जो टारगेट रिफॉर्म्स थी इसमें एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म में, द रिफॉर्म्स हैज मेजर टारगेट्स टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. द प्रपोज्ड रिफॉर्म intended to provide improved pre-service education and continuous program of in-service training to school teachers. तो स्कूल टीचर्स के लिए प्रपोज रिफॉर्म्स और इम्प्रूव्ड pre-service education और कंटिन्यूस प्रोग्राम्स इन सर्विस ट्रेनिंग के शुरू करने का टारगेट दिया गया. और इसके लिए एक्शन प्लान जो था, रिवीजन ऑफ करिकुला फॉर फ्रॉम क्लास 1 to 12 इसमें बताया गया. और इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल टेक्स्ट बुक स्कीम्स, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ प्लानर्स, मैनेजर्स, टीचर, एजुकेटर्स, टीचर्स एट ऑल लेवल, और सेटिंग अप ऑफ प्रोफेशनल कैडर फॉर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन. तो सेपरेट प्रोफेशनल मैनेजमेंट कैडर भी इसके लिए सजेस्ट किया गया. बिल्ड अप ऑफ द टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को तरक्की दी गई, उनको बनाया गया. बिल्ड अप ऑफ टीचर्स training institutions and examination reforms and setting up of examination boards in private sector में भी examination boards कायम करने की तजवीज़ दी गई और प्लान बनाया गया. establishment of national education assessment system, ये भी इसमें एक्शन प्लान में बनाया गया जो कि बन गया. और फिर सिस्टम ऑफ एकेडमिक एडल्ट लिंकेज ऑफ ग्रांट्स इंसेंटिव्स विद क्वालिटी. तो ये भी एक अहम इकदाम था इसमें कि एकेडमिक एडल्ट लिंकेजेस ऑफ ग्रांट इंसेंटिव्स विद क्वालिटी के साथ इंसेंटिव्स फराहम करने का लिंकेजेस और ये सारा कायम करने का एक इसमें एक्शन प्लान बना. और इंक्रीज नॉन सैलरी बजट बाय 3% एनुअली. तो चूँकि आम तौर पर एजुकेशन सिस्टम में का एजुकेशन का बजट 80% सैलरीज पर मुश्तमिल होता है और डेवलपमेंटल बजट कम होता है, लिहाजा इसको तय किया गया कि 3% एनुअली इसमें इजाफा किया जाए. रिवैम्पिंग ऑफ साइंस एजुकेशन, द अदर टारगेट वाज द रिफॉर्म्स एम्ड एट इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ साइंस एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग updated science equipment, professional growth of teachers and facilities. The action plan was construction of science laboratories, provision of equipment and consumables, it means chemicals and science and glass pipettes and so on, and development of video textbooks, training of head teachers and managers, master trainers and teachers, एट्सेट्रा. सो ये थोड़ा एक्शन प्लान था इसके लिए साइंस एजुकेशन को रिवैम्प करने के लिए. हायर एजुकेशन के टारगेट्स क्या थे? द टारगेट एंड रिफॉर्म्स वर थी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थ्रू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इम्प्रूवमेंट्स ऑफ हायर एजुकेशन, टू इम्प्रूव द एक्सेसिबिलिटी एंड एनलार्ज द एनरोलमेंट, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन, मेजर शिफ्ट टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी. एक्शन प्लान इसके लिए था restrictivity of research in institutions of higher learning, professional development of teachers, increasing access to higher education, increasing enrollment. यानी इस पॉलिसी में जो 2010 का टारगेट था 2010 तक 10% इंक्रीज करना एनरोलमेंट में, तो फिर इसके लिए एक्शन प्लान ये बनाया गया. सो एनकरेजमेंट फॉर प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज, इंक्रीजिंग फाइनेंशियल एलोकेशंस, अपग्रेडेशन ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस प्रोग्राम्स और इंट्रोडक्शन ऑफ IT एजुकेशन एटसेट्रा. Next reform, vocationalization of general secondary education. Target reforms to make education meaningful and work oriented. Technical stream has been introduced at secondary school level. Action plan इसके लिए बनाया गया. The existing scheme of studies to be revised to accommodate a new technical stream
along with the science and humanities streams. So development of teaching, learning, resource materials and construction etc. Workplace in the तो ये थे एक्शन प्लान इसके वोकेशनलाइजेशन ऑफ जनरल सेकेंडरी एजुकेशन के. नेक्स्ट टारगेट जो था इसका प्रमोशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन. टारगेट एंड रिफॉर्म था द रिफॉर्म फोकस क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन. For this purpose, the education plan, action plan was made. Establishment of one technical polytechnic at each district headquarter for boys, one polytechnic for girls at each divisional headquarter. So one monotechnic for men in separately public populated districts. One mathematic, one monotech for women in thickly populated districts. तो ये इसमें टारगेट एक्शन प्लान्स थे टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए. नेक्स्ट इसका टारगेट था मेन स्ट्रीमिंग ऑफ मदरसा एजुकेशन. सो टारगेट रिफॉर्म द रिफॉर्म्स एम टू स्ट्रीमलाइन the religious education institutions in the country for enlarging employment opportunities for their graduates and making it compatible with the emerging needs. यानी बढ़ती ज़रूरियात के मुताबिक टेक्निकल एजुकेशन को इस काबिल बनाना, रिलीजियस एजुकेशन को, कि वो वहाँ उनके तलबा के लिए एम्प्लॉयबिलिटी के मौके बढ़ सकें. द रिफॉर्म्स एडवोकेट रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग करिकुला ऑफ रिलीजियस एजुकेशन. पाकिस्तान मदरसा एजुकेशन बोर्ड्स हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड टू लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द स्कूल्स. This purpose the action plan was made. So incentives program to facilitate teaching of subjects like English, general math, general science, computer science, social studies, Pakistan studies at primary level and secondary levels, English, economic, computer science and Pakistan So English, economic, computer science and Pakistan studies at higher secondary level were introduced, or one-time grant package on affiliation with Madrasa Education Board. So those madrasas were grant one-time aid if the Madrasa Education they affiliate their institutions with the board. Next, the important target of this education sector reform was public-private partnership. Target reform: the reforms aimed at improved service delivery through public-private partnership. For this purpose, action plan was made, offering incentives package for private sector, involvement of private sector in the management of underutilized public sector institutions, facilitating grants and soft loans for the development of education, introduction of adopt school program. So maximizing utilization of public schools buildings by school upgradation in the afternoon shift from primary to higher secondary levels through a community participation project, CPP, community public-private partnership, yes, a community participation project, and introduction of information technology courses in school through public-private partnership, etc. These were also introduced. And the last target of this education sector reform was adult literacy. This adult literacy target and reforms were focused so high
So under the reforms, National Commission of Human Development (NCHD) has been set up with the President of Pakistan as its chairman. The commission has developed district-based infrastructure to reach people, to task encompasses establishment of literacy centers throughout the country. The National Plan of Action on Education for All 2001 to 5 targets to open 5,25,000 literacy centers in with 1,18,000 teachers by 2016. This was the target. The literacy program implies district specific targets, literacy cycle of 6 to 8 months with the due improvement of mass media mobilization campaign. The national plan spells out 3 phases of adult literacy plan 2002 by 15, each phase comprising 5 years with overall goals. For this purpose, action plan was made and suggested, ensuring the learning needs of all young people and adults are met through equitable access to appropriate learning, life skills and citizenship programs, achieving 50% improvement in the levels of adult literacy by 2015, especially for women, and equitable access to basic and continuing education for all adults, all especially in literacy flume, racy and essential life skills achieves improving all aspects of quality of education and ensuring excellence of in literacy, so that the recognized and measurable learning outcomes to achieve recognized and measurable outcomes. Dear students, this education sector reform was adopted by the provinces and province of Punjab. This was renamed as CM Roadmap, Chief Minister Roadmap for Education, after the completion year of this education sector reform. It is still continued in the province of Punjab. So this was very important project which develop the missing facilities and improve the focus areas, which I discussed the focused areas with action plans. So this in next lesson I will discuss on the first 5-year plan of education in my next lecture. Thank you very much.